AMU मैं समझ सकता हूँ सर कि IQAC का डायरेक्टरशिप, जबकि मैं डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लिया हूँ तो कितना परेशान रहता हूँ, और आप सर पूरे यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी लिए हुए हैं. He was nodal officer of AMU, memorandum of understanding review committee. He is the member of in charge research, Dawakhana Tibbiya College, coordinator TST PURSE program AMU Aligarh, and coordinated grant of 35 of 13 departments and centers for various type of projects. He was coordinator of university sophisticated instrumental facilities, and he was coordinator of Summer University Alumni Affairs Committee AMU Aligarh, and member of various national international scientific bodies and organization. मैं काउंट कर रहा था सर, तो अभी तक तो 35 मैंने काउंट किया था. अब बस I think this is more than enough. I think we can start putting my words. Thank you. इस सर के बारे में अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं, इनकी मैं बता नहीं सकता. You can visit on the department of Circuit Department Interbiotechnology Unit AMU Aligarh, and you will find a detailed CV. And I hope that participant you will surely inspire. इस एज में सर ने क्या क्या अचीव किया, और so many country he has visited for the purpose of academics as well as administrative purposes. So with these words, I would like to invite our today's respected resource person of HRDC AMU to discuss on the topic quality publication. Thank you very much, sir, for joining with us. Now the mic over to you, sir. Thank you so much, Dr. Aftab Saab, and for a very generous and nice introduction to me. Participants, I think let me first tell you that would you like me to talk about the bilingual or just in English or in any mixed language? So because sometimes many of you request that you talk about in Hindi and English. So I mean, if you are okay, then I can talk in both the languages, no issue. Bilingual is fine. Yes. Hello. Bilingual is fine. Okay. Fine. Thank you so much. So now, without taking much delay, I'll start my session. Right, friends. As I have been given a chance to talk about the quality publication, the word quality publication is basically very vague in terms of like at which aspect you are going to talk about the quality publications. Number one. Second, as far as the publications are concerned, you have different types of publications. So first we'll talk the publications like book publications and article publications. Then you have manuscripts like review articles publications. Then you have many review articles, systematic reviews, and then reports, comments, editorial, letters. So there are many categories of these publications, right? Depending upon the subject in which you are, for example, if you are from science background, biology, physics, chemistry, maths, right? Or you are from the humanity background, or you are from the social science background, medicine background. So it depends on which subject you are in. Accordingly, the manuscripts categories have been made. जो manuscripts की publications की categories होती हैं, वो अलग-अलग fields में अलग-अलग sections, अलग-अलग subjects में अलग-अलग categories होती हैं. Generally, science के अंदर जो है वो review articles, systematic reviews articles बहुत common होते हैं. उसके अलावा research articles, research publications होते हैं, उनके अलग-अलग patterns and formats होते हैं, and that formats and patterns are defined by the publications. For example, Elsevier, Springer's, Bantham, right, Wiley. So there are many publications, good publications are Springer, Nature. Then you have some other publications, Frontiers and BMC. All these publications are basically depending upon the publications, publishers, right? So publishers क्या चाह रहा है, किस तरह के किस तरह के मतलब उसको मैन्युस्क्रिप्ट को चाह रहा है, इनवाइट कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है पब्लिशर पे. तो उसमें यू डोंट बॉदर अबाउट दैट. व्हाट यू बॉदर अबाउट योर ओन रिसर्च and your own outcome of the research in the form of publication. So broadly speaking, there are two types of publications. One we call the review articles, another we call the research articles. This I'm talking about the science. Now, if you talk about the humanities, arts and humanities and
social sciences, where you have publications categories. Basically, they are based on the literature-based publications. So, it is as good as a review articles as we do in a science. But what is the difference between the scientific review articles and the arts and humanities publication? Is something new you come up with based on the literature. For example, if you are working in the area of Hindi and you are working on some kavi, कि फला कवि है, उसने एक उसका थीम क्या है या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, तो you did your research on that and you end up with some new findings on that kavi or many kavita that they have been put in. So this is something new, although you don't have any experimental strategy. Unlike in science you have a specific strategy. I'll come to that point also. You have a specific strategy and methodology that you adopt. एक strategy आप बनाएंगे, एक methodology develop करेंगे, and then you end up with some results and you conclude these results in the form of some concluding remark, and that's what we call you have a complete story and you publish it. Whereas in the science, in the arts and humanities and social science, you don't have any experiment. In social science, there are certain experiment based on survey. You can have like social science, you can have some survey of some societal survey and for the benefit of society, or some survey studies, statistical studies may be considered. But generally, experiment and strategically technology-driven experiments are generally not, or rather not involved in any arts and humanities experiments, research. So first, this is what I differentiate. There's two kind of research and two broad categories of research in two different disciplines. Now I'll talk on what to publish and why to publish. This is very important before you learn how to publish and where to publish, and what are the criteria of publications. So before that, you must know why to publish and where to publish. Now the question why to publish is of course very simple to answer by yourself, that because I have done this experiment, I have done this research, and I want to publish it for the public domain. And I wanted to, for example, Raman spectroscopy, the C.V. Raman, one of the Indians, Nobel laureate, who got a Nobel Prize in Raman effect or scattering effect in physics. So when he did this experiment and he performed experiment based on certain data he generated, and then he ended up with some concluding results, and these results are authentic results, and he claimed these results as the best, and the hypothesis what he proved through these results is well fit in that results, through that results. जो hypothesis C.V. Raman ने produce की थी, उसको उन्होंने अपने results से देखा कि ठीक है. I mean, this is perfect. From his views, it is perfect. But when the scientist or when the researcher, when the author is convinced by his own research, then he or she want to display for the public. Then C.V. Raman wrote letters to different editorial boards and different organizations that what he has done, wonderful job. And then he tried to make the acceptability among the scientific community and editorial boards of different journals, magazines, scientific journals, that what he has done is correct. What are the evidences, what he raised through the experiments, he proved that these are the correct. So कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो भी रिसर्चर होता है वो किसी ग्राउंड पे, किसी एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड पे कुछ कंक्लूड करता है रिजल्ट्स को, और उस रिजल्ट्स को प्रूव करने की वो पूरी कोशिश करता है. He tried to prove like through these experiments. That's how the science works. And then people accepted it, and then ultimately he got a Nobel Prize. Well, so this is a long story. I'm cut it short because there's no sense of talking about only on the Raman or this specific story. The purpose is to talk about the quality publication. Now, this is why we publish. So whatever you did, whatever you proved through the experiment, through the survey, through literature, and based on your hypothesis, right, and background analysis, this has to be published. Why publish? Because publish not for the publicity, publish for the
benefit of the society. For example, you have made some experiment in science or in arts and humanity, you have concluded some very novel research and some information, and that is very relevant for the society. So this information has to be in the public domain. How to bring in the public domain? So public domains means the domain where any relevant field person can easily check and see that publication or that manuscript or that content or that results or that information. This is the purpose of it. And of course, when you publish it, you will be known in that field on that ground. This is the byproduct of publication. But the main outcome of publication is to bring the information into the public domain, to bring the information into the public domain for the benefit of society, for the benefit of a common man, our scientific community for that matter. The outcome, the byproduct of it is that, of course, your publicity, your awareness about the peoples that you are in this particular area, and you can you're working in this area, and you can have better expert in this particular field. That's a byproduct. So then, where to publish? So why to publish? We understood now where to publish. Now this will be decided where to publish based on your research, based on your study. आपकी study और आपकी research decide करेगी कि कहाँ हमें छापना है. मैं भी उस पॉइंट पे आऊंगा. किसी ने शायद कमेंट, अभी किसी ने चैट पे लिखा है कुछ, जस्ट पॉप अप के लॉन्ग मैनस्क्रिप्ट्स की भी बात. I'll talk to these long. I'll talk the whole like overlay of the manuscript writing and what are the content and component of a manuscripts that basically make the manuscript publishable, both in the scientific community. I mean, it would be good if you can tell me that does it heterogeneous population, heterogeneous participants of the different groups are some specific from science or arts, humanities. I think they're heterogeneous participants from different groups. So I can mix up the things like in both the way, so that the arts and humanities participants and the participants from the science background can easily understand the whole thing. So where to publish is like, for example, you can publish, first you have to decide the, broadly speaking, where you have to publish that information into the book form, review form, or in the journal article form, right? What we call the research article, long manuscript research article form, or you want to publish it in some like some other form, like in manuscripts, some other manuscript form. So this will be decided based on your research outcome in the form of results, in the form of conclusion, based on hypothesis, as well as your own wish. For example, I have done some very wonderful work, and somebody invited me that you have to, Professor Asad, you have to write a chapter for my book. I'm composing the book on this particular topic, and that particular topic is well fit in my area. So, and I have done that research. I can write a good article and submit in that book also. But does that book make more publicly to my article, or does it has more value to publish in the book as in chapter from the perspective of also your promotion, API, and other kind of stuff? Or it is good to publish in core journal of your field? So this has to be decided by you. And what are the basis of taking decision on that is, of course, impact of your study. For example, I mean, that can be answered like, for example, मैंने काम किया, I think this work is very good for the society, and rather than publishing that into a particular book that is edited by some editor as one of the chapters, I prefer to publish that in a separate journal. And that journal should be on the core journal. For example, I'm working in the area of drug designing. Of course, biotechnology is a broad area, working in the drug designing, drug development. So there are many journals which are based on the drug development or drug designing, right? So I prefer
my first preference will be on the specific core journal where my visibility is more, as well as those who those who already are who are taking interest in my research will definitely go these journals to read. For example, that book may not be touched upon, having that article to be visible, which has written by me. So this is, I think, the reason that you prefer to publish in the core journal, which is more public in the community and the society where your fields are, the persons of your field are available. All right. So this, what is the impact of this? The impact of this, your visibility will be increased, your citation will be increased. Now, since we are talking about the quality publication, so at this point, I would also like to emphasize very, very important point, very, very important aspect of the quality publication, which we come late, जो मैं बाद में बताऊंगा फिर बाद में आपको, तो यहाँ से आप रिकॉल कर लेना उस चीज को. क्वालिटी पब्लिकेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो ये उसका मेजर करने का ये होता है कि वो पब्लिकेशन, चाहे वो जर्नल पूरा हो या उसमें एक आर्टिकल हो, कितना साइट हुआ है. मेरा पेपर जो मैंने छापा एक जर्नल में, वो काफी बार साइट हो रहा है, 100 बार, 200 बार, the number of times they have been cited. It means that paper has something very important, because the hundreds of people are citing my paper, and that impact the quality journal. So journal की जो quality define होगी, अभी मैं उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, where to publish. तो उसी कैटेगरी में, उसी हेडिंग में ये बात है कि हम कहाँ छापें. पहले तो हमने डिसाइड किया कि हम बुक में नहीं छापेंगे, हम इसको जर्नल में छापेंगे. नंबर 1, always good to publish in journal rather than in a book. Book is something like you can have some remaining data which has not been published in journal, maybe taken away, because publishing in a book as a chapter is very, very easy, because it is not peer reviewed by the experts. It is peer reviewed by a core committee of the editorial team. They may have some biasnesses. उनके अंदर कुछ bias हो सकते हैं वो, and they may publish, sometimes they may not publish, but 90% chances are more that chapters in a book invited is always published. But articles, even invited articles, may have a not as high chance of publication as in book. So it means publishing a book is easy, and so the value is also less. So suppose if you have if you have published 10 chapters and you publish 2 articles, so this 2 articles would have more weightage over 10 chapters. This is very important, and that too is true for very selection committees when you go, right? And that too is true for many promotions where you have to go. So my purpose of pointing out this point here is that publication quality will depends on the citation, and of course citation depends on your own quality research. So ultimately आपकी quality जो research है, जो quality work है, वो मैटर करता है क्वालिटी पब्लिकेशन. मेरे हमारी फील्ड में जैसे जो साइंस के लोग यहाँ हैं, पार्टिसिपेंट्स में हमारे, वो जानते हैं कि पब्लिशिंग इन नेचर, साइंस, सेल आर वेरी, वेरी हाई इम्पैक्ट. बट पब्लिशिंग इन नेचर need a lot of work and high quality work, right? So ultimately quality comes from your work. You cannot make the quality by improving the paper by some other mean, except that paper should only accept the high quality research. ये है bottom line, मतलब this is what the crux of the matter. हम जब quality publication की बात करते हैं तो हम top to bottom नहीं बल्कि bottom to top जाएं. we should not talk about the quality publication like journals, high journals, and then how to publish. We talk about the high quality research to be published in high journal. That's the quality research, that's the quality publication. So high quality research will definitely go for the high quality publication. Low quality research will go for the low quality publication. So this is the aspect of quality publication. So I've talked about the why to publish, clear to you, and where to publish, clear to you. We will also touch upon these things during the course of further in half an hour or 1 hour. But let's talk about the structure of the manuscript. Irrespective of the subject, whether it is arts and humanity,
or whether it is a science and technology, medicine, engineering, doesn't matter. What is the basic criteria? How to initiate publication? उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक थॉरो, एक हाइपोथेसिस बेस्ड रिसर्च करना होगी. So first you develop a hypothesis. हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस ये होती है, हाइपोथेसिस बेस्ड होती है सम बैकग्राउंड्स के ऊपर. अब आप कहेंगे बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड ये होता है, मान लिया आप काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं या zoology में आप काम कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक फील्ड, मे बी यू आर वर्किंग ऑन सम इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी में काम कर रहे हैं, इंसेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. तो आपने ये देखना है कि ये इंसेक्ट्स का जो एक कोई नया इंसेक्ट्स आपको मिला, उसका आपने ये देखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, राइट? मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ ऐसी. वो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने लिटरेचर पढ़ा, उस ग्रुप के इंसेक्ट्स को देखा, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, कैसा होता है. फिर आपने एक्सपेक्ट किया बेस्ड ऑन दैट बैकग्राउंड कि हाँ इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह हो सकता है. दिस इज व्हाट यू प्रपोज एज अ हाइपोथेसिस. क्यों हो सकता है उसको आपने रेशनल से डिफाइन किया, क्यों इसके ग्रुप के और जो इंसेक्ट्स हैं उनका भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा है. ये आपने एक जनरल हाइपोथेसिस डेवलप करी. Now, the question is, the proving the hypothesis through different experiments, different observation, different literature search, you end up with the result. Yes or no? आपने कहा साहब इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लंग्स है या विदाउट लंग्स है या व्हाटएवर. वो जब एक्सपेरिमेंट्स किया आपने, अच्छा एक्सपेरिमेंट्स क्या होंगे? एक्सपेरिमेंट्स भी डिजाइन किए जाएंगे उसी के बेसिस पे, हाइपोथेसिस के बेसिस पे. हाइपोथेसिस के बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, फिर आते हैं रिग्रेस मेथोडोलॉजी. अब मेथोडोलॉजी के बेसिस पे रिजल्ट्स, and then you conclude it. So this is the basic structure of the any journal that you or any research that you talk about. Now let's talk about the first background. बैकग्राउंड का मतलब ये है कि अब तक जो रिसर्च हो चुकी है पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 20 साल में कुछ रिसर्च हुई होगी, उन रिसर्च को आपने लिटरेचर को पढ़ा, एंड यू कंक्लूड विद some concrete conclusion that okay this has been done and what are the gaps. अब इसमें gaps कौन से हैं? ठीक है, gaps का मतलब क्या होता है? क्या क्या चीजें अभी बाकी रह गई हैं जिस पे हमें रिसर्च नहीं करी. I mean this is true for every field, whether it is a languages, arts, humanities, commerce, business administration, you name it. किसी भी फील्ड में आप बात कर सकते हैं. दिस इज ट्रू. जहां जहां गैप्स हैं उन गैप्स को फिल करने का नाम क्या है? उन गैप्स को फिल करने का नाम है रिसर्च. तो गैप्स को कैसे फिल करेंगे? अब हमने देखा गैप्स को फिल करने के लिए आपने जाहिर है सारे गैप्स यू कैन नॉट फिल. यू आइडेंटिफाइड सम ऑफ द गैप्स, जो लैक्यूना है, जो गैप्स है, जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आपने देखा, ऑब्जर्व किया, पढ़ा, लिटरेचर देखा, उसके बेसिस पर आपने एक हाइपोथेसिस डेवलप करी. And that hypothesis is basically based on the same background that you worked on, right? And this hypothesis will, the offshoot of hypothesis, a hypothesis का जो net result होगा वो आपके कुछ objectives होंगे. Objectives जो होते हैं वो direct in line होते हैं methodology के. ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम रिसर्च करें या कैसे हम अपना प्रोसीड करें कैरियर को, चाहे वो थीसिस की हम पीएचडी करा रहे हों या हम पेपर लिख रहे हों, इन्हीं कैटेगरीज के ऊपर सारी चीजें हो. ठीक है ना? आपने क्या किया? आपने पहले लिटरेचर पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, एनीथिंग. उस लिटरेचर में आपने उस थीम पे देखा था दिस इज समथिंग इज मिसिंग, एंड देन बेस्ड ऑन दैट मिसिंग इंफॉर्मेशन यू डेवलप हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस होगा आपका एक्सपेक्टेशन होगा. अब मैं अपने फील्ड के एग्जाम्पल लेके आपको बता सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे मेरा काम करता है, जैसे भी आफ्ताब साहब ने बताया आपको, कोऑर्डिनेटर ने. अब मैंने ये लिटरेचर देखा कि साहब ये ड्रग जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे रही है बच्चों के अंदर
NICU में, यूनिट इंटेंसिव केयर यूनिट में, और बच्चों की डेथ हो रही है. दैट वाज इन माय मैंने हाइपोथेसिस ये कि ये जो ड्रग रेजिस्टेंस है ये जो है हो सकता है कोई जेनेटिक मार्कर्स इसके अंदर, मोबाइल जेनेटिक मार्कर्स किसी जीन्स के थ्रू इसमें ट्रांसफर हो रहे हो, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करने के बाद दवाओं का असर नहीं हो रहा. दिस इज जस्ट माई स्पेकुलेशन एंड माई हाइपोथेसिस. नाउ नेक्स्ट विल बी, अब मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किया. ऑब्जेक्टिव क्या सेट किए? ऑब्जेक्टिव मैंने ये सेट किए कि ऑब्जेक्टिव ये सेट किए मैंने कि हमें पहले सारे बैक्टीरियल आइसोलेट्स को चेक करना है, उनका ड्रग रेजिस्टेंस चेक करना है. ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमारे काम का एक ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद हमने देखना है कि इसमें रेजिस्टेंस पैटर्न क्या है. ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया. देन वी हैव टू स्टडी के इसका रीजन क्या है, जो रेजिस्टेंस इसमें डेवलप हो रहा है ड्रग के अंदर, उसका रीजन क्या है. उसका रीजन हमने देखा, कुछ जेनेटिक प्रोफाइल उसका देखा, कुछ मशीन्स PCR होते हैं हम लोग के यहाँ, उससे हमने चीजें सारी चेक करी. तो ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया. अब हमने जब सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लिए ये, और ऑब्जेक्टिव्स को हमने इम्प्लीमेंट किया उन मेथोडोलॉजी के जरिए, जैसे हमने पहला ऑब्जेक्ट था हमारा, हमने बैक्टीरिया को स्क्रीन करना है, आइसोलेट करना है. तो आइसोलेशन की कुछ मेथोडोलॉजी है. हम कल्चर बनाएंगे, मीडिया बनाएंगे, ठीक है, उसको प्लेट पे ग्रो करेंगे, स्ट्रीक करेंगे, है ना. स्ट्रीक करने के बाद हम उसको कॉलोनीज आइसोलेट करेंगे, फिर हम उसको DNA निकालेंगे, फिर उसको जीन करेंगे, PCR करेंगे, जीन निकालेंगे, एंड देयर होल स्ट्रेटजी. तो इस तरह से स्ट्रेटजी हम अपना डेवलप करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड रिगरस स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे. उसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे, उस मेथड्स के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे, वो हम कहते हैं रिजल्ट्स. वो रिजल्ट्स जो होंगे, उस रिजल्ट्स को हम डायरेक्ट नहीं छाप देंगे, उस रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट्स मींस, डिस्कशन का मतलब ये होता है जो रिजल्ट्स हमारे आए, क्या वो रिजल्ट्स इससे पहले भी किसी को मिले हैं. मतलब हाउ डू यू प्रूव योर रिजल्ट्स. You should have some justification, you should have some evidences, literature evidences, experimental evidences, where you can say कि साहब ये रिजल्ट्स हमारे ठीक हैं. उसके लिए आपको फिर लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, करंट लिटरेचर देखना पड़ेगा, ओल्ड लिटरेचर देखना पड़ेगा, एंड यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन आर रिजल्ट्स, व्हाटएवर योर ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स विल बी कोरिलेटेड फ्रॉम द अर्लियर रिजल्ट्स. अच्छा, कभी कभी इसमें क्या होगा कि आपकी चीज जो है वो बिल्कुल एकदम नई है, कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है. इफ इट इज कंट्रोवर्शियल देन यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई इट इज कंट्रोवर्शियल, व्हाट आर द कंडीशंस. तो अगर कंट्रोवर्शियल है तो आपको ये नहीं करना अपना रिजल्ट को डिलीट कर देना, हमारा रिजल्ट गलत है, नहीं. एक चीज आप और याद रखिए, रिजल्ट्स कोई नेगेटिव नहीं होता. मैं ये बात उन लोगों से ज्यादा कह रहा हूँ जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग हैं, क्योंकि साइंस में ये होता है ना कि साहब हमने जो चीज सोची थी वो आई नहीं, नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो वो रिसर्च ही नहीं है, इसमें आप पहले से सोच लें. आप सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं. वो आपकी हाइपोथेसिस फेल भी हो सकती है और क्लियर भी हो सकती है, मतलब इट इज इन फेवर और अगेंस्ट, बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल. तो आपके अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स नेगेटिव हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए रिजल्ट. आपने रिसर्च में देखा साहब हमें ये चीज नहीं मिली, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है. ये हमने इस पॉपुलेशन के अंदर एक डिजीज सर्च करी, तलाश करी, इंडियन पॉपुलेशन में ये नहीं होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है, दिस इज अ रिजल्ट. आप कहें साहब ये तो नेगेटिव रिजल्ट आ गया हमारा, 9 में आ गया रिजल्ट, अब हम इसे कैसे रिपोर्ट करें. नहीं, दिस इज अ नेगेटिव रिजल्ट. तो until unless a very something very peculiar and specific where you have to look into positivity and you got negative, but otherwise whatever you are doing based on the missing information in the background, and that through hypothesis and through rigorous methodology and technology, then you always end up with some observation. I call it not result but observation, and that observation is basically your results which you interpret. Now सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिसर्च में है वो इंटरप्रिटेशन है. इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन मतलब ये होता है कि जैसे मैं इसकी मिसाल बहुत ही क्रूड और रॉ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इसकी, कि एक चीज को आपने देखा, जैसा कुछ चीज आपने देखी और आपने कहा साहब ये चीज तो ये है, तो आपने उसका एक नाम दिया.
दूसरा आदमी ने देखी, उसने कहा नहीं साहब ये चीज ये नहीं है, ये चीज दूसरी, उसने दूसरा नाम दिया उसका। अगर कोई चीज वेग फॉर्म में है, अगर डिफाइंड चीज है तो कोई इशू ही नहीं है उसके अंदर। अब जाहिर है एक किसी ने फोन देखा तो फोन ही है, एवरीबॉडी से, बट समथिंग विच इज अननोन, एक आदमी कह रहा है साहब ये तो माउस है ना, एक आदमी कह रहा है नहीं साहब ये तो मुझे लगता है कि यार ये दिस इज समथिंग लाइक पेन है, ये किसी ने कहा साहब ये कप है। सो एवरीबॉडी हैज इट्स ओन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन, बट फाइनली देखा क्या जाएगा, देखा ही जाएगा कि जो हमने, विल गो बैक एंड सी द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड, राइट, एंड दीज एक्सपेरिमेंट्स जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन हमारा है। अगर कर रहे हैं तो फिर वो हमारी चीज ठीक है, फिर वो यही बेसिस होती है पेपर एक्सेप्टेंस की और पेपर रिजेक्शन की। हाई क्वालिटी जर्नल्स में जो पेपर रिजेक्ट होते हैं उसकी मेन वजह जो होती है वो मेथडोलॉजी होती है। बैकग्राउंड नहीं होता, हाइपोथेसिस नहीं होती, ऑब्जेक्टिव्स नहीं होती, वो तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। आप कोई भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, लेकिन आपने जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है क्या वो ठीक है? हाइपोथेसिस जो ठीक हो सकती है आपकी, आप कुछ भी सोचने से आप मुझे ये चीज देखना है, आपकी हाइपोथेसिस है, दिस इज टोटली न्यू हाइपोथेसिस, nobody object it, but does this hypothesis thoroughly proved through some experimental evidences, or through literature? Is that literature is correct? Does that literature has some senses, some strong references, some earlier work done on that field? So all these things to be considered, then papers to be decided to be accepted or to be rejected. तो ये तो हुई methodology की बात, right? Now रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में, जैसे मैंने पहले बताया था, रिजल्ट्स जो हमारा आउटपुट आएगा उसमें डिस्कशन में हम क्या करेंगे, डिस्कशन में हम साइट रेफरेंसेस करते हैं कि हमने ये काम किया, हमें ऐसे मिला, अर्लियर लोगों को ऐसा मिला था और कुछ लोगों को हमारी जैसा मिला था। मैं एक बहुत लेमैन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। सो योर रिसर्च इज इनकंसिस्टेंट, इन कोहेरेंस विद द अर्लियर रिसर्चर, दिस इज वन थिंग, and your research may not be in coherence, in concordance with the earlier researchers. Both the things are possible, but it does not mean that if it is not in coherence with the others earlier researchers, it does not mean that, or rather never mean that you reject your research. No, if you have done your research meticulously and you end up with some experimental evidences, thoroughly आपने ईमानदारी से काम किया है, honestly काम किया है, and you end up with, you repeat it. If you repeatedly finding the same information or same observation, then you are correct, your research is valid. Now अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे this art of interpretation, अब उसको आप इंटरप्रेट करना शुरू करिए। कुछ लोग उसको इंटरप्रेट अपने हिसाब से करेंगे, कुछ और दूसरा ग्रुप अपने हिसाब से करेगा। आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, और आप इंटरप्रिटेशन, देखिए इंटरप्रिटेशन भी कोई हवा में नहीं होता है। आपने साहब मैंने तो ये इंटरप्रेट कर दिया इससे, उसकी बेसिस होती है। इंटरप्रिटेशन की अगर बेसिस नहीं है तो योर इंटरप्रिटेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द reviewers as well as by the editor of the journal or editor of the book, depends on what kind of a publication you are going. So interpretation के लिए the best thing for interpretation is the literature survey. आप जितना डीपली लिटरेचर सर्वे करेंगे, अच्छा एक चीज और भी इसमें है, खाली लिटरेचर सर्वे डीपली का मतलब ये नहीं कि आप बहुत से आपके 50 साल पुराने पेपर आप पढ़ लीजिए। डीपली का मतलब ये है कि आप कितना प्रिसाइजली, कंसाइजली और मेटिकुलसली, स्पेसिफिकली आप अपने कोर एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज एन आर्ट ऑफ रिसर्च। तो इंटरप्रिटेशन उसी की बेसिस पे होगा। आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं बिल्कुल पिन पॉइंट कर दीजिए उसको, दिस इज व्हाट माय कंसर्न। सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको अपना इंटरप्रिटेशन करना है, जब वो इंटरप्रिटेशन वैलिड होगा। अगर उसके प्रिसाइज और पिन पॉइंटेड ऑब्जर्वेशन जो कंसर्न है आपकी लिटरेचर में, उसकी बेसिस पे इंटरप्रिटेशन अगर नहीं है तो फिर वो इंटरप्रिटेशन वेग होगा। इट मे बी पब्लिश, इट मे नॉट बी पब्लिश, बट द हाई पीयर रिव्यू जर्नल्स, हाई टायर जर्नल, जो बड़े जर्नल्स हैं, जो हाई इम्पैक्ट हाई क्वालिटी जर्नल्स हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देंगे।
or basically the 90% reason of the rejection is the wrong interpretation either, or absurd methodology or irrelevant methodology. कभी कभी लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस कुछ होती है, मेथोडोलॉजी कुछ डिजाइन करते हैं, और एंड रिजल्ट्स उनका कुछ और आता है. तो द कोरिलेशन एंड कोहेरेंस ऑफ योर हाइपोथेसिस through results, through methods into the results is very, very important. So the three things are very important. One is the hypothesis is not very important because hypothesis is essential. There's a difference between essential and important. Essential means ये आपको करना ही है, hypothesis तो आपको बनाना ही है, कोई नई चीज आपको दिमाग में अपने सोचना है based on literature. ये तो मतलब mandatory exercise है किसी भी रिसर्च की, जो पब्लिश करेंगे आप बाद में जाके, तो मैं, लेकिन ना इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर्स पे. इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है हाइपोथेसिस, राइट. जितनी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन के लिए उस हाइपोथेसिस को, जो वॉट एवर हाइपोथेसिस को प्रूव करना है. अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए. यहाँ इंपॉर्टेंट का मतलब अदर वे मत लीजिए आप. इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कंपेरेटिव इंपॉर्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ कि हाइपोथेसिस के कंपैरिजन में methodology is more important because methodology is something which is based on your own design strategy based on your hypothesis. So hypothesis तो आप initially conceive करेंगे अपने brain में, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकती है. I mean that any idea came in your mind. This scientist के mind में कुछ भी idea आ सकता है, जो चीज हमें नहीं पता है, हमें लिटरेचर देखा कि हाँ ये चीज मिसिंग है, देन वी डेवलप हाइपोथेसिस. लेकिन उस हाइपोथेसिस को प्रूव कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड दैट इज द, इफ समबडी लर्न दिस चैलेंज, देखिए आइडियाज आना और आइडियाज को कंसीव करना बहुत मुश्किल काम नहीं है किसी भी एकेडमिशियन के लिए या टीचर रिसर्चर के लिए. वो आप 10 मिनट बैठिए कमरा बंद करके अपना रूम में लैंप जला के, टेबल लैंप जला के, है ना, लाइट अंधेरा करके बैठिए और सोचिए किसी चीज पे जो फील्ड है आपकी, लिटरेचर की बेसिस पे, फिर लिटरेचर पढ़िए, आपको 50 आइडिया आ जाएंगे. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप हाइपोथेसिस बना लेंगे. लेकिन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द प्रूव दिस हाइपोथेसिस, प्रूव दिस आइडिया. आप इस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, ये एक चैलेंज होता है रिसर्चर या साइंटिस्ट के आगे. उसके लिए आपको स्ट्रेटजी, मान लीजिए मेरी हाइपोथेसिस है कुछ और मैंने बिल्कुल एब्सर्ड से मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर ली, उसकी जरूरत ही नहीं है. उसके बेसिस पे कोई रिजल्ट जो आएगा उसका इंटरप्रिटेशन आप हाइपोथेसिस से लिंक्ड ही नहीं होगा, वो कोई रिलेशन ही नहीं होगा उसका. तो वो सब एब्सर्ड रिसर्च है. यूज एंड मोर देन 50-60% रिसर्चर्स डूइंग लाइक द सेम थिंग. इसलिए वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते. रिसर्च शुरू करेंगे बड़े एंथुसियास्टिक तरीके से, ये भी करेंगे, हाइपोथेसिस कुछ है, मेथोडोलॉजी कुछ है, रिजल्ट्स कुछ है, इंटरप्रिटेशन कुछ हो गया, एंड वी राइट ए वेरी गुड पेपर्स. 8-10-12 फिगर भी डालेंगे उसके अंदर, टेबल भी बनाएंगे, ये एंड स्टडी इज नॉट कोहेरेंस. देयर इज नो कोहेरेंस इन द स्टडी एंड देयर इज नो kind of linkage between the hypothesis to methodology and to interpretation and results. So that kind of a studies, आपको लगता है साहब बहुत बड़ा अच्छा पेपर लिखा आपने, 3000 वर्ड 4000 वर्ड का, लेकिन इट वाज रिजेक्टेड वेरी फर्स्ट डे. इधर आपने सबमिट किया, उधर रिजेक्ट हो गया बड़े जर्नल में. आप कहते हैं यार बड़ा रिजेक्ट कर दिया, इतना अच्छा मैंने पेपर लिखा, इतनी मेहनत करी, इतनी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इतना पैसा खर्च किया, मेरे स्टूडेंट्स दिन रात लगे रहे, एंड भी हमने चूहे पे भी काम किया, हमने एनिमल पे भी काम किया, हमने ये भी किया, वो भी किया, एंड वी हैव डन सो मेनी थिंग्स एंड पेपर गॉट रिजेक्टेड. व्हाट इज द रीजन? रिजेक्शन का रीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ignorance of rigorous methodology to prove hypothesis and finally interpretation. Interpretation के बाद आप कुछ conclude करते हैं. Conclusion की 2 लाइनें होती हैं, 2 या 4-6 लाइनें लिखा जाता है conclusion end of the paper, and this conclusion is basically clear-cut reflection, expanded form of the extended reflection of your title. फिर मैं ये बात कहूँगा, टाइटल से आप चले, conclusions और टाइटल से चले, हाइपोथेसिस, थ्रू हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, एंड देन यू एंड अप विद द कंक्लूजन. तो आपको जो कंक्लूजन, एक सर्किल बनाई है, ये सर्किल जो है बेसिकली, दिस सर्किल इज बेसिकली नथिंग बट दिस इज काइंड ऑफ अ होल रिवॉल्विंग
cycle of your paper. So title जो होगा, the title is something which is directly dictating the conclusion. मतलब title पढ़ के मैं किसी पेपर का मैं conclusion लिख सकता हूँ. I can write a conclusion just by reading a title without reading any paper. And that conclusion, I'm sure, would be, if not 100%, then at least 60 to 70% correct if we read the conclusion or if we read the whole paper and to write a conclusion. So title में और conclusion में ये bonding होती है. If we, क्योंकि देखिए पेपर आप कहीं भेजते हैं तो किसी के पास टाइम इतना नहीं होता है कि एक लाइन पढ़ता है. There are many few reviewers, old reviewers, those who have. अच्छा, आजकल पेपर भी बहुत होते हैं, बारिश होती है पेपर की, रोजाना 2-3 आर्टिकल्स आते हैं रिव्यू के लिए हमारे पास. तो आदमी कितना पढ़ेगा? कुछ रिजेक्ट कर देता है, कुछ वापस कर देता है. आदमी क्या पढ़ता है? टाइटल के बाद वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है. खाली एब्स्ट्रैक्ट में पूरा एक एक्सट्रैक्शन होता है पूरे उसका, और उसके बाद वो कंक्लूजन पढ़ता है. उससे से आइडिया हो जाता है कि हाँ, इसकी जो कंक्लूजन है इसने निकाला है, वो जो उसकी हाइपोथेसिस थी, बेस हाइपोथेसिस जिस पर टाइटल इसने बनाया है, उससे कुछ कंक्लूजन निकल रहा है. देन he or she try to read the results and discussion part and see some methodology, just scroll down the methodology, क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, ठीक है नहीं है, references ठीक है. So this is how to read and review the papers, and based on that reviewers make a conclusion कि सब ठीक है, पेपर के अंदर ये shortcoming है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, and then they put some comments and send back to the editor again revise it if they want, otherwise they might be rejected. तो पूरे पेपर का कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ये है. Now, this is the structure of the research article, full research article. Now, कभी-कभी short research articles होते हैं, structure उसका तकरीबन यही रहता है, but sometimes they may not ask you to define the body of the paper into different categories like background, hypothesis, and objectives, and so on. This is just write a methodology and results in discussions, and sometimes they write just results and not discussions separately, or sometimes they ask don't write conclusion. Conclusion may be part of your discussion. So these are kind of a guidelines of a different journals. So we don't bother about these methodology, these guidelines for the journals and the way to present the paper. But the most important thing is what the body I have discussed here, from background to conclusion, as a layout of the whole papers, research papers. Now, contrary to this, the review article. So I'm broadly categorizing the research articles and review. Although research articles may be in the form of editorial, maybe in the form of a small report, commentary, and small kind of a script. It depends on the your short results and short information you gathered through first time. So you just write a letter to editor, or editorials can be written. Generally, editorials are written by the editors of the journals for promotion of a journals, to highlighting the theme and to highlighting the objectives and theme of the journal, where they invite the articles to get published, from big scientists and other. The review articles, which is again important articles both in science and humanities, and science and technologies. That review articles is basically the information which you gathered, consolidate rather, from the latest literature, and you bring it on the one platform for the scientific community. So this is the definition of the review article. Review article is defined as an article, written script, where the consolidated form of the research, latest research in the field may be gathered, and then bring it onto the single consolidated form of an article, review articles, and give it to the in public domain for the society or for the scientific community, those who are basically in this particular field. So review article में again ये depend करता है किस जर्नल में आप छाप रहे हैं, उस जर्नल की instructions क्या हैं. कुछ जर्नल्स में वो रिव्यू आर्टिकल में इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड की हेडिंग डलवाते हैं, फिर उसमें सब हेडिंग्स जो होती हैं वो आपकी कंटेंट हेडिंग्स कहलाती हैं. कंटेंट हेडिंग्स का मतलब ये है कि जिस थीम पे रिव्यू आर्टिकल लिखा जा रहा है उसमें क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, क्या क्या हेडिंग्स हो सकती हैं.
एक तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया विच इज कॉल्ड बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड की बेसिस पे लास्ट में आप ये लिखेंगे कि इन व्यू ऑफ दिस बैकग्राउंड, राइट, इन व्यू ऑफ दिस बैकग्राउंड we propose a hypothesis. In case of research article, in case of review article, we propose a concept, a notion, right, on this objectives of the review article in order to provide the consolidated information on this particular topic. For example, just the COVID vaccine ki baat kar rahe hain. So whatever the COVID vaccine has been developed and brought into the market and implemented into the communities in different countries, how many different types of vaccines, what are the methodologies used in these vaccines, वगैरह वगैरह. There's so many things. All together compile and से आपने एक बड़ा अच्छा सा रिव्यू आर्टिकल लिखा जिसमें सारे वैक्सीन्स डाल दिए उसमें. तो अब किसी आदमी को अगर एक वैक्सीन के बारे में पढ़ना है तो उसको 10 पेपर देखना पड़ेंगे या 10-20 पेपर देखना पड़ेंगे. अब इसमें क्या हुआ, रिव्यू आर्टिकल आपके पास है, फ्रॉम अ सिंगल रिव्यू आर्टिकल यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन. Are you getting this point? So this is the advantage of the review article. Review article provide a comprehensive and consolidated information on a latest research topic on a single platform for the researcher, for the users, right? Society में जनरल पब्लिक के लिए जाहिर है ये रिसर्च आर्टिकल्स जो साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं वो नहीं होते हैं. तो इसको हम कहते हैं these are called the secondary information, indirect method of having societal impact on the society, because this will help the policymakers to change the strategies and policies, right, for the society to develop some new policies. So this is what the purpose of the review article. इसी तरह से एक systematic reviews होते हैं. Systematic reviews होते हैं वो थोड़े advanced reviews होते हैं और वो एक specific topic पे literature, सारे literature based reviews होते हैं और वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर रिव्यू आर्टिकल लिखे जाते हैं. दैट सिस्टमैटिक रिव्यूज इज बेसिकली मोर ऑफ ओरिएंटेड टुवर्ड द पॉलिसी मेकर्स. तो जनरली सिस्टमैटिक रिव्यूज जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई यूजीसी है या कोई और प्लानिंग या कोई और फंडिंग एजेंसी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या इवन एनजीओज हैं, वो कुछ सर्वे करा के, कुछ रिसर्च करा के, कुछ रिव्यू कराते हैं और फिर उस रिव्यू की बेसिस पे वो प्रपोज करते हैं गवर्नमेंट को टू मेक द पॉलिसी. फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में इस वक्त एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के क्राइसिस है एंड इट इज सेड दैट बाय 2050 almost 10 million people will die every year, and after COVID-19 the time is reduced, not 2050 but maybe 2030 or 2035, or by 2050 even rather than 10 million it could have like 20 million. तो either way is possible. So अब ये एक सिस्टमैटिक रिव्यू डेवलप करके इसकी बेसिस, क्योंकि सिस्टमैटिक रिव्यू के बगैर आप बात करेंगे गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट इसको, बिकॉज सिस्टमैटिक रिव्यूज आर एविडेंस बेस्ड रिव्यूज. एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज जो होती हैं वो हर कंट्रीज में, हमारे यहाँ भी है, यूके में ज्यादा इसका रिवाज है. सो एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज का मतलब ये होता है कि वो रिव्यू लिटरेचर, सिस्टमैटिक रिव्यूज के बेसिस पे वो उन एविडेंस को मान के वो पॉलिसीज बनाते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिस्टमैटिक रिव्यूज कराती है, कराए हैं आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च, और वो फिर उसकी बेसिस पे क्या करते हैं कि साहब पॉलिसीज बनाते हैं. ठीक है साहब, हम इस ड्रग को बैन करते हैं या हम इस ड्रग को जो है वो सप्लाई कम करवाएंगे इसकी, या हम कहेंगे ये ड्रग जो है वो फार्मेसीज पे ओवर द काउंटर नहीं मिलना चाहिए. सो ये पॉलिसीज मैटर्स होते हैं. तो जितनी भी पॉलिसीज मैटर्स होते हैं वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज मैटर होते हैं सारे, क्योंकि उनको लॉजिक देना होती है पार्लियामेंट में. दे हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन द पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. दिस इज need to be implemented. This bill has to be passed. Why the bill has to be passed? They have to justify it. They have to defend it. So these are all based on systematic reviews in different social sciences and medical sciences. I mean, it depends on what kind of information to be implemented, what type of policies to be made, what type of evidence is required for that policies to be implemented by the government. And all countries, government and senates or parliaments, they are always asked the evidences to implement some specific thing. For example, अगर आपने कहा कि साहब हमें जो है वो इंडिया से एंटीबायोटिक्स को ओवर द काउंटर खत्म करना है,
We are not supposed to, we will not allow any pharmacy in India on the road to sell any antibiotic. This is the serious matter, and we as an expert always propose this to the government, but government needs some evidences. So now systematic reviews has been generated and developed. Even government paid a lot of money to invite systematic reviews, because it's not easy to write systematic reviews. You have to write a lot of literatures, compile it, condense it, and then propose and then present the systematic review. Now these systematic reviews based as evidence for the government to implement and to इसको जारी कर देते हैं फिर वो कि साहब ठीक साहब ये पॉलिसीज हम बना देते हैं क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ है इसका, हमें साइंटिफिक कम्युनिटी ने या हमने एक टास्क दी, एक प्रोजेक्ट दिया किसी को, उसने हमें ये बताया सब ये एविडेंसेस हैं, तो एक्सपर्ट कमेटी पे बैठते हैं, उसको रिव्यू होता है, देन फाइनली. सो दिस इज not at all with the quality publication. I'm just giving you some additional information, but again come back to the quality publication. Now let's come the quality publications, which is the high quality publication. ये तो मैंने अभी बात बताई आपको. क्वालिटी पब्लिकेशन में हम जाएंगे कैसे? मान लीजिए मैं बात करता हूँ नेचर, साइंस, सेल, and both. These are the journals in biochemistry, biotechnology, which are the top tier journals. So हम इसमें कैसे छापेंगे, उसका मैंने तरीका बताया. हम रिसर्च कैसे करें, हम कैसे, हाउ डू वी रीच टू द पिनिकल ऑफ द हाई राइज ऑफ क्वालिटी of our research so that any high impact journal can accept it. Now then come to what is basically the, I think questions can be asked just in 10 minutes or 5 minutes when I finish my talk. सबसे पहले हम बात करते हैं हम जर्नल्स को कैसे पता करते हैं, क्वालिटी जर्नल्स को. अब जो नया पहले इम्पैक्ट फैक्टर होते थे, अभी भी इम्पैक्ट फैक्टर है. हम कहते हैं साहब Q1 Q2 क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2 3 4 इस तरह के इन्होंने कैटेगराइज किए हुए हैं. तो Q1 Q2 journals are always supposed to be top journals, and Q1 Q2 journals are based on the so many factors: perception of a journals, other criteria of a journals, not only based on the citation index, or not only based on the impact factor, because citation index is one, impact factor is one thing which may be sometimes fake. I know many journals which propose the fake impact factor on the website, and they make people fool, right? And they say, okay, this is a 10 impact, 2 impact, 7 impact, 8 impact, but they are not really impact, right? If they show the impact, the volumes of the journals are not much higher. They don't have repeatedly, kind of a volumes released by the journal. Maybe उन्होंने महीने में एक जर्नल निकालना है या साल में 4 जर्नल निकालना है, तो accordingly वो somehow अपना manage कर लेते हैं impact factors को, and they can pose that impact factor is very high. Impact factor जो है वो citation से बढ़ता है, there's no doubt in it, and citation is dependent on the quality of work. As I have told you earlier that अगर आपको quality देखना है तो how many times your paper is cited, it means your work has some quality. लेकिन क्वालिटी बनाना कैसे हमें, उसके लिए मैंने ये जो अभी आपको एक मंत्रा बताई है, कैसे हमें चलना है, कि कैसे कैसे रिसर्च को प्रमोट करना है. क्योंकि पहले हम रिसर्च करेंगे ना, फिर हम पब्लिश करेंगे. बगैर रिसर्च करे पब्लिश थोड़ी होगा. Nobody can publish without research. So first you do research and then publish. और उसके लिए आपको ग्रांट चाहिए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए फंडिंग चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए there's so many things. Lot of hurdles nowadays are there in many Indian universities, especially state universities and many central universities even in colleges. So it's very difficult to publish in a high quality journal, and therefore people compromise just to UGC care journals. And this is the reason, in order to get promotion, a lot of people are publishing in UGC care journals, which are not quality journals. I don't consider UGC journals, I might be controversial in that from the government perspective or from UGC perspective, but I very openly said all the list of UGC care journals are not up to the mark from my perspective. Even this, I'm talking about the science. So all the UGC care journals are like, and that is the reason. Every time you find some of the journals are missing, some new journals were added. Again, after 2-3 years, some journals are missing from the list, some new journals. So you keep changing the list again and again. And I'm not objecting this from the UGC to UGC, but I think this is, I don't consider UGC, I never care of publishing any paper in a UGC care journal. UGC care journal is just for the
you may call the low level and low quality benchmark of UGC, which UGC, and UGC is also bound to it, because UGC has make a high benchmark. In that case, many of the colleges and state universities which are not funded or fail. अगर बेंचमार्क जो है यूजीसी अपना बहुत हाई बना देगी, एक बेंचमार्क ही है, इस बेंचमार्क को अटेन करना आसान है compared to this benchmark, because this is higher benchmark. So you can attain the lower benchmark, whatever lower or high, but it is a benchmark. So UGC recognize these journals as a benchmark to publish in it, and so based on that you got impact indexing, or you got the number in API and all kind of things. So finally I conclude my lecture. If you are doing research for getting API score, then you can never be a good researcher. Then you can never be a quality researcher. You can never think of publishing in quality journals. So forget about targeting API score if you are really do high quality research, and forget about targeting about the API score for promotion. API score, जो लोग API score follow करते हैं, या we are bound to follow API score. In other words, even the central universities, to get promoted, at least from the lower level, assistant and associate professors, to get promoted for the professor, they're bound to publish like here and there, and that make the lower quality. And India is basically facing problem at the quality research. I'm not talking about the number of publications. India is very, very ahead of publishing, large number of articles every year, big data, but quality is very, very, very low. So if you look the percentage of quality publication published from India and published from USA, you have a big difference. You may get large number of papers published from India, but the quality is at least 80-90% reduced quality than the published from USA. Why? Because USA, I'm talking USA because USA is an ultimate benchmark. So USA laboratories, many laboratories in USA are all across. They don't care about the API or promotion kind of a thing. They do research for research. And those who don't want to do research, they don't do research. They just teach. They do their own business. They have their own companies. They run the companies. They're earning the money. पैसा कमा रहे हैं वो. तो किसी ने नहीं कहा कि आप क्वालिटी रिसर्च करिए, किसी ने कोई कंपल्शन नहीं है. करिए तो फिर क्वालिटी रिसर्च करिए, उसका आउटपुट आना चाहिए, सोसाइटी को फायदा होना चाहिए. देखिए, हम पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हैं. I'm using the public money because the tax. I'm also taxpayer, and we all are taxpayer, but we are using our money, tax money, in the form of different government projects, extramural projects. So जिस पब्लिक का पैसा हम यूज कर रहे हैं, उस पब्लिक को, सोसाइटी को हम कुछ देना, ये तो जस्टिफाइड नहीं है. And we keep publishing just for our own sake and for own kind of a promotion and here and there for no use. मैं बता रहा हूँ, हम अपने खुद पेपर साइट नहीं करते हैं, हम अपने खुद पेपर पढ़ते नहीं है छापने के बाद. In India, you find many of the PIs like they just publish कर दिया, API नंबर मिल गया, स्कोर बढ़ गया, बस अब हमारा प्रमोशन हो गया, that's it. So अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, because I'm also heading the quality assurance cell in AMU, so I always talk about the quality. And if you talk about the quality, then quality means like you have to be dedicated and sincere and honest researcher in order to attain something with a high benchmark. So your benchmark should not be UGC care. Your benchmark to be internationally recognized benchmark, which is like every international scientist all across Europe and America and all publishing. So you should have like, high quality, high tier journals, Scopus, Web of Science journals. So these are the benchmark, right? High impact journals, high cited journals, high perception journals, old journals, right? So this is the benchmark. Our benchmark is not the UGC care journals just to publish for 6, 7, 8 page paper published. You just pay to any publishers and many publishers, they have a tie-up with the UGC care journals and they say, okay sir, हमारा journal जो UGC care में आता है, लिहाजा करा ली. मैं तो क्योंकि IQAC डायरेक्टर हूँ, every
every month I have to sign many journals to be inducted into the UGC care list from Aligarh, from other places, and BHU and other places. People send journals just to sign, because it is a mandatory that to be approved through the director IQAC. So I have made some benchmark. Before I approve the journals, I have to look into the volume, look into the repetitions of the volume. ऐसा नहीं सब 3 साल जर्नल चला फिर बंद हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया उसका जर्नल बंद कर दिया, हमने अपने सिलेक्शन के लिए जर्नल में 10 खूब पेपर छाप लिया अपने, उसका हमने जर्नल बंद कर दिया. So this is not like that. Once you publish in a journal, that journal should live. देखिए अगर जिस जर्नल में आप छाप रहा है, पेपर छापा है या है ना, वो जर्नल अगर डेड हो गया तो your work is dead. Your work has no value. So perpetuation is very important. Continuous publication of the journal in which you are publishing. बहुत सी जर्नल्स हैं वो 125 वॉल्यूम, 150 वॉल्यूम सालों से चल रहे हैं, डिकेड्स एंड डिकेड्स से वो चल रहे हैं वो जर्नल्स. तो कितने स्ट्रॉन्ग जर्नल्स होंगे वो. तो हमें उन जर्नल्स को टारगेट करना है जो क्वालिटी जर्नल्स हैं, हाई इम्पैक्ट जर्नल्स हैं, एटलीस्ट स्कोपस ऑफ वेब ऑफ साइंस जो बेंचमार्क हैं, स्टैंडर्ड ग्लोबल बेंचमार्क हैं, इंटरनेशनल बेंचमार्क हैं, उसको हमें फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है. I think with this I have completed my talk, and if you have any questions, few questions I can take, because I have another important meeting at 5:30. So I was expecting this lecture at 3:30 to 5, as discussed with some person from your. नहीं सर, ये लेक्चर साहब पहले 3:45 से था. हाँ राइट. इस बार जो हमारा सेशन चला है वो 4 o'clock से करते हैं. ठीक, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम. सॉरी सर. Yeah, I'm here. No problem. I'm here. You can ask me questions. मुझे पता चला कि I tried my best to condense and compile my talk in a very concrete manner. Of course, sir. Of course, no doubt. I was listening. Participants, if you have any doubt, any question, you can ask regarding the quality publication. Sir is here with us. Yes. Sir, I have a question. Yes, please. हाँ जी सर, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव लेक्चर यू हैव डिलीवर्ड. We are really thankful to you. Secondly, because I am also doing research. So first question is research all about finding gaps only? First thing is this, and second is can you please mention in short processes for a good research? What in short, what? Process for good research. Processes. Okay, process. आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है सर. मैं पहले बताइए आपकी फील्ड क्या है? My field is वैसे it is history, but I am working on Punjabi literature. Okay, good. देखिए ऐसा है कि पहला क्वेश्चन आपका जो था वो मैं थोड़ा पूरा समझ नहीं पाया. कि research all about finding gaps on. हाँ, देखिए ऐसा ना, हाँ ऑब्वियसली फाइंडिंग गैप्स का मतलब ये है कि आप इसको दूसरी तरीके से देखिए. आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, ठीक है. यू डिसाइड सम टॉपिक रैंडमली, पिक अप सम टॉपिक, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन सम योर बैकग्राउंड नॉलेज. लेकिन जब आपने उस पर देखा, लिटरेचर सर्च किया, देन यू एंड अप विद ये चीज तो ऑलरेडी हो चुकी है. बात समझ आ रही है? तो जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके बारे में पब्लिश डेटा मौजूद है या वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो आपको पहले नहीं पता था जब आपके दिमाग में ये आइडिया कंसीव हुआ. क्योंकि आइडिया तो साइमल्टेनियसली बहुत से लोगों के दिमाग में कंसीव हो सकते हैं. कुछ आइडियाज कंसीव हमारे दिमाग में होते हैं जो ऑलरेडी चीजें हो चुकी होती हैं. होता नहीं होता? तो मेरा मतलब वहाँ गैप से मतलब ये है कि आप उस चीज पे रिसर्च करना है जो चीज अभी तक नहीं हुई है. अब जो चीज हो चुकी है उस पर आप रिसर्च कैसे करेंगे? तो गैप तो है ही है वहाँ, राइट. गैप डज नॉट मीन्स दैट आप किसी स्पेसिफिक चीज की गैप देख रही हैं, उसको फिल करके कनेक्ट करेंगी. वो भी एक होता है, कनेक्टिंग द डॉट्स कहलाता है, वो रिसर्च में एक स्लैंग है. लेकिन ये कि जनरली यू हैव टू वर्क ऑन द topic where the work has not yet been done, or of that particular aspect that you are trying to explore, उस पे काम नहीं हुआ है. Actually, the topic I am working on
I have to work on gaps between literature and history. So it is somewhat difficult to fill those gaps. So that I ask you how to go. That's interesting because जो डिफिकल्ट चीज है वही तो रिसर्च, वही तो चैलेंजिंग होती है, उसी से तो क्वालिटी रिसर्च बनेगी। आप उस डिफिकल्ट चीज को मेक इट इजी through your research, through your observation, through your literature information, and you connect these dots, and that is what your achievements. So what are the processes? The process तो मैंने पूरे बहुत डिटेल में आपको बताया। किसी भी रिसर्च का प्रोसेस ये है कि आप उस पर लिटरेचर सर्च करिए, ठीक है। आपका क्योंकि एक्सपेरिमेंटल नहीं है, थ्योरेटिकल सारी चीजें हैं, लिटरेचर बेस है, तो लिटरेचर देखें। लिटरेचर जो बैकग्राउंड मिलता है उससे हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी कि सब हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, कैसे उसको हम करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा आप कोई एल्गोरिथम बनाना है या कोई हम उसमें मेथड्स क्या डेवलप करना है। मेथड्स मैं समझता हूँ आपके केस में तो मेथड सिर्फ लिटरेचर ही होगा कि आपने पुराने लिटरेचर देखे, कनेक्टिंग साइड लिटरेचर्स देखे, एक चीज देखी फिर उससे कनेक्टेड और क्या चीज हो सकती है वो देखा आपने, एंड बेस्ड ऑन सम लिटरेचर यू जस्ट कंक्लूड सम योर ओन इंटरप्रिटेशंस, योर ओन कंक्लूजन, एंड यू प्रपोज सब ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, दिस इज व्हाट वी कनेक्ट, वी डू इट। सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस। लिटरेचर भी इसी प्रोसेस होगा, क्योंकि दो चीजें हैं रिसर्च, या तो लिटरेचर बेस्ड रिसर्च है जो हम थ्योरेटिकल रिसर्च कहलाती है। साइंस में थ्योरेटिकल रिसर्च थोड़ी डिफरेंट होती है। साइंस में थ्योरेटिकल रिसर्च में आपका कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर सम एल्गोरिथम्स होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, बहुत सी चीजें एल्गोरिथम के थ्रू होती हैं। कंप्यूटर साइंस है, एल्गोरिथम के थ्रू है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में रिसर्च लोग करते हैं, एल्गोरिथम बेस है। लैंग्वेज लिखेंगे आप, कोड लिखेंगे, है ना, AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो उसके थ्रू। लेकिन इस केस में जो कोर मतलब प्योर लिटरेचर है या प्योर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स हैं, उसमें तो सिर्फ लिटरेचर है। यू हैव टू रीड थॉरोली एंड ट्राई टू गेट द इन्फॉर्मेशन। बहुत सी चीजें आपके पास नहीं होंगी, बहुत सी बुक्स नहीं होंगी, उसको आपको पता करना होगा। बहुत सी चीजें पता करना होंगी आपको कि कहाँ मिल सकती है, देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट बुक एंड यू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट बुक और दैट जनरली बुक्स हेल्प्स यू लॉट, ओल्ड बुक्स एंड न्यू बुक्स। सो उस तरीके से करें आप, है ना। राइट सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। Hello. Yeah. Sir, thank you first of all for your insightful lecture. Sir, you said very well that when we actually doing our research, our first and foremost target is to get a high citation. Right. So my question is, sir, in order to get high citation, high number of citations, what should we look for? I mean, at the very beginning, should we target a high impact journal or a medium journal? देखिए, हाई इम्पैक्ट साइटेशन के लिए नीदर यू गो फॉर हाई इम्पैक्ट जर्नल नॉर यू गो फॉर द लो इम्पैक्ट जर्नल। आप अपने यू जस्ट गो थ्रू द कोर जर्नल। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी फील्ड क्या है, व्हाट इज योर रिसर्च फील्ड? Sir, my research field is mostly ecology, but it is also connected to climate change, sir. राइट। सो आप एनवायरमेंटल फील्ड के आदमी हैं, तो क्लाइमेट चेंज पे के जो जर्नल्स हैं या इकोलॉजी स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज पे जो जर्नल्स मौजूद हैं, आप उनमें अपना छापने की कोशिश करिए। उसकी वजह ये, अगर उसका इम्पैक्ट लो भी है तो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ओन साइटेशन। क्योंकि देखिए, क्लाइमेट चेंज में जो लोग पढ़ेंगे वो आपकी स्टडी को वही लोग साइट करेंगे जो क्लाइमेट चेंज के लोग होंगे। आपकी स्टडीज को मान लिया आपने किसी इकोलॉजी के, जोलॉजी फील्ड के किसी इकोलॉजी में छाप दिया, आपने छप जाएगा वहां भी आपको इकोलॉजी के नाम पे, लेकिन वहां जो लोग इकोलॉजी को पढ़ेंगे, देखिए जो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इरेलेवेंट जर्नल्स को पढ़ूंगा, मेरे पास तो मैं अपने कोर जर्नल्स को देखूंगा अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए या पेपर देखने के लिए ना। तो मुझे मिला साहब, मैं ठीक है, मैं भी इकोलॉजी पे काम करता हूँ, मैंने देखा साहब इकोलॉजी, उसमें एक रिसर्च पेपर आया साहब संदीप मजूमदार का, साहब ये दिस इज वर्किंग ऑन दिस क्लाइमेट चेंज। तो मैं कहूँगा यार क्लाइमेट चेंज से तो मेरा कोई मतलब नहीं आया, जस्ट फॉरगेट इट। तो लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज के जर्नल में छप रहा है तो वहां पे आपके 10 लोग भी अगर में से 4 भी छाप देंगे तो यू हैव गॉट अ 4 citation. Yes, sir, it is true. We should look for the subject oriented or what is the area of my research. If the journal is also they're doing some work in my area of research or in my field, those journals will be most suitable for me. But sir, my question is different. In order to get a high citation, what should we look for, sir? Targeting a high impact journal at the very beginning or a medium journal, sir? This is my question. देखिए, पब्लिशिंग
you can publish in even Nature, high impact journal. The reason is that it depends on your own research. आपकी research का, what is the level of your research? What is the quality of research outcome? अगर आपका, if your research outcome is at the level of publishing high impact journal, you can go for high impact journal. Doesn't matter whether you've initiated your career or not. Because, sir, why I am asking this, because sometimes it has been seen that publishing my research paper in high impact journal doesn't ensure that this paper will get a high citation. Rather than if I look for a medium journal and No. I after publishing that paper, it got a lot of citation. So this is a little bit confusing. No, this is, I think this is a matter of, it may be a matter of chance, but what I believe is that you always try to, doesn't matter whether your citation are 2 or 4, but because you will get impact of your paper also, your journal also. You will get the credit of the your article being published in high impact journals or high tier journals. For example, you publish paper in case of some top tier journal of ecology, which is core ecology journal with more than 10 impact. So whether anybody is citing it or not, but your impact itself is impacting the the committee or your other benefits you will get it. Otherwise, high quality people, those who always prefer to go for high impact journals. For example, I'm working on the drug discovery, so I prefer to read like Nature papers and Cell papers and some molecular biology, MCB and genes development, right? JBC papers. So I'll always try to publish and try to cite the top tier scientist work in my research articles. It doesn't matter whether I am publishing myself as a low impact or high impact. It depends on my own study, but I always try to cite the studies of a high impact journal, because citing your studies from high impact journal also make your research article impactful for that particular journal. Are you getting this point or not? Yes. This is very important. So this is not like you publish in low or high. It depends on what is the level of your research. Always try to high impact journal first, and then you come down. If it is rejected from high impact, then you come down to low impact, and then accordingly. So always try higher, because higher, placing your work in higher will always good. There's no doubt in it, because many good people will approach that and they will pick up your work. And for example, if somebody has picked in some review article your work from Nature, for example, you have published some good journals and somebody has published you cite your paper, one person in some review article in Nature, and that review article is kind of cited thousands times. So these thousands people definitely go through, at least 10% will go to, you'll get 100 citation. Right. So always try to go high impact and high quality journals. High impact, I will not talk. I don't prefer always high impact, because sometimes the impacts are not fake, but some high tier recognized journals and Scopus and Web of Science journals are always good to publish, and core journals are always good. So suppose if you have a 4 to 5, 6, 7 impact, it's considerably good impact. So of course, in very high tier journals like in Nature and Science and publishing there, it really needs a lot of efforts and time also, as well as the efforts and funding also, to get them recognize yourself to be published in these journals. Okay. Right, sir. And this is just a general discussion, sir, since you have made one comment for that UGC care listed journals. I also agree with you. It's not a comment, it's just like my observation. This is also my observation too, sir. That's why I'm talking to you on this matter. UGC care listed journal, particularly the care list 1 journal, those are actually not maintaining a high quality journals. UGC itself is not maintaining that high quality standard. Since I have also seen that so many journals are getting included in that list and getting also rejected that list. I mean, this is a dynamic process. Right. Sir, we have also noticed that many predatory journals are also included right this moment, also included in the UGC care list. Yes. Technically, predatory journal, this is a confusing word for me, since the UGC care list journal 2, those are international index journals.
those are also doing their own business, sir. We the researchers, being the researchers, we are also we actually do all the hard works, doing our experiments, generating data, analyzing the data, writing the paper and publishing in journals. Those are actually doing business with our research, and they are not giving paying any royalty for that. Right. Those are I mean the international publishing houses like Wiley, like Taylor Francis. I have also published my papers in Wiley journals, in Taylor Francis also, but they are also doing their own business, sir. This is it is up to you, discussion on. संदीप सर, मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करें कि आपको क्वालिटी जाना है, एपीआई के लिए जाना है, या क्वालिटी पब्लिकेशन करना है. मुझे जो लगता है सर कि इट इज डिसाइड कर लीजिए. Yeah. Sir, what is your view? I mean, actually, those international indexing journals, I mean, the publishing houses are doing their own business with our research. Yes, why can't we, the university, with the people who are actually present in universities and colleges in the higher education system, can't we publish our own journals? Each and every university, every academic higher academic institutions publish our own journals and targeting our universities only. That if I want to publish my journal, I will look for the AMU journals only, because they are maintaining a high standard of journals, not targeting the international indexing journals. Can't we do that, sir? You Why are, do you think? You are correct, but I think to change the perception of 100-year-old perception. Yes, sir. That is the main. So, I mean, breaking the perception is really big task, because you cannot, for example, if you ask me that to publish in AMU journal, I will never publish it, because it is not recognized. I'll go with the Villay, Springer, although they are all paid journals. And, you know, nowadays, almost 90% Springer, Nature journals, they're all paid. Right. They're doing their own business. But the thing is that we'll go with the journals which are recognized by the standard Scopus and Web of Science. So this is safe. I mean, usually many predatory journals which are not cited by the Scopus and at least Web of Science. Web of Science are more harsh than Scopus. Scopus can pick up many journals, but Web of Science are very choosy in, like, you know, selecting our comparatively. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. For your participation in your busy schedule, you have given us time. On behalf of HRDC, I would like to thank you again, sir. Thank you very much. Okay, thank you so much.